Good evening. Good evening. My voice is okay? Voice and this board, both are fine. Wonderful. Okay, that's fine. Let me see, if I can. You guys got just a minute. ये आपको मिल गया? शशांक इसको लगाएंगे जरा, इसको जरा डाउनलोड किया है, जस्ट पुट दैट थिंग, इसका डाउनलोड वर्जन का, हाँ इसका PDF अपलोड कर दीजिए। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है नहीं आप लोगों को? बताइए क्या क्या कितना कैसा चल रहा है इकोनॉमिक्स में? लग रहा है अच्छा स्कोर आएगा नहीं आएगा? क्या हुआ? चलो रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं आ रहा, उसमें अननेसेसरी टाइम जाएगा। ठीक है रहने दो, ठीक है रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। पीसी में लगा दो ना, पीसी में ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। हाँ पीसी में लगा दो, ठीक, बताइए। ओके अनंत Dhyani, this is your first session, no problem. Okay, so almost we have done I think 5-6 sessions, right? So we talked about money, we talked about agriculture, we talked about OMS, poverty. So gradually you must develop confidence, right? At least आपको idea होना चाहिए कि what sources you have to read, and the most important thing is quantum of work you have to do. I've emphasized it again and again on group as well on classes. 4 A4 rim sheet बननी है, कोई जादू, there is no magic. ऐसा कुछ नहीं होने लगी एक दिन में किसी एक सेशन से कुछ जादू हो जाएगा, no. That quantum of work you have to do. See, this is the quantum of work you have realized. Whatever your background, educational background, 10th में कितना मार्क्स था, 12th में, वो सब मैटर ही नहीं करता, right? Okay, thank you, ठीक, okay, thank you. तुम मुझे कहाँ से देखना होगा बोला? मिनिमाइज करके यहाँ पे मैक्सिमाइज, ओके थैंक यू। सो सी आप उसको लगाइए जरा, जूम वाला जो इंटरफेस है ना, जूम, मुझे जो दिख नहीं रहे बच्चे, वो नहीं, जूम वाला दिखाइए। हाँ दिस इज फाइन, ओके ठीक है। नाउ गिवन दिस, ओके अखिल एंड सो सी अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस थिंग, 4 A4 rim sheets, ओके उस पर ध्यान दो। कोई यानी कोई मैजिक नहीं होने वाला है, उसमें क्या 10th में परसेंट था, 12th में क्या परसेंट था, राइट? इट डज नॉट मैटर कि आपने मेडिसिन स्टूडेंट और व्हाट यू विल डेफिनेटली स्कोर 110 मार्क्स इन GS इकोनॉमिक्स, nobody can stop, right? Try to understand this, the quantum of work this is more important, and see this is the quantum of work which I have told you, approximately 4 A4 rim, right? Or 10 lakh words. Second thing is the intensity of labor. See, this is the quantum of labor, right? Second thing you must understand intensity. मान लीजिए किसी को बोलना है कि 100 किलोमीटर चलना है और वो चलता है 100 साल में, क्या मीनिंग है उसका? Is there any meaning of that traveling? So intensity of work. Intensity of work 2 सिटिंग लगाना है दिन में, 3 से 4 घंटे का, ओके? मॉर्निंग में उठो, नो ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट वो करते हैं जिनको कुछ नहीं करना होता है, राइट? फॉरगेट, गिव अप ब्रेकफास्ट फ्रॉम योर लाइफ। 3 to 4 आवर्स की एक सेटिंग होनी चाहिए मॉर्निंग में, 3 to 4 आवर्स की एक यानी इवनिंग जो भी है, ये 2 सेटिंग होनी चाहिए विथ कंसंट्रेशन ऑफ थॉट इन दैट जब डिजॉल्व हो जाओ अपने वर्क में, और ड्यूरिंग दैट वर्क ट्राई टू डू दिस। तो आप देखोगे अपना आप आपकी जो UPSC की जो मार्कशीट होती है उस पर अपना 110 स्कोर आ जाएगा, ठीक है? So always remember this. Now, okay. So today's session is on. Just a minute. I will show you. You must have got this thing, right? Does India needs a new economic policy? Have everyone got this PDF? Anand, Guram. So anyway, I will share on the group. 3 of you are on the group. Okay. I believe. Okay, okay, why this is happening? Okay, some people have joined from the YouTube and some people have joined from the
Zoom. Okay, that's why I see. No problem. But anyway, I will share on the group. Now, let's say, okay, I say, okay, ये आपको दे दिया जाए हैंड आउट, इसका भी क्या मीनिंग होगा आपके लिए? कि ऐसे तो कोई बुक है, राइट, वो दे दो, गिफ्ट कर दो, देयर इज नो मीनिंग, राइट? तो मीनिंग है व्हेन यू एक्सट्रैक्ट दैट थॉट योरसेल्फ, व्हेन यू रीड समथिंग, लेट्स से यू रीड एन इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर, ask yourself after reading this chapter, can I write some 100-200 words in my notes? Today I shared one RBI speech on the group. Just read that speech, some few paragraphs, or just think, how can I write at least 1 or 2 lines in my mains answer sheet? That is the most important work you have to do. Okay? Yeah, Vijay, yes, fine. Okay, so please go through this document, and what's this talk about? New economic policy. But does India needs a new economic policy or not? पहले आप एक स्टोरी सुन लीजिए थोड़ा सा, राइट? ये तो टॉपिक ठीक है, पहले आप ये सोचिए कि इसका आपके जो मेंस के मार्क्स हैं और एसए में कहाँ कनेक्टिविटी है। एक तो क्या हो सकता है कि yes, the economic policy now, you know, the last we still call it new economic policy, although it came in 1991. So India might need a new economic policy, right? So although इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम है, राइट? इट विल बिकम ए वेरी टेक्निकल क्वेश्चन, उस तरह का यूपीएससी में नहीं आता है मेंस में। हाँ, लेकिन वन थिंग यू कैन डू फ्रॉम दिस डिस्कशन, आई विल गिव यू सम कंसेप्ट्स, कुछ आइडियाज, कुछ कीवर्ड्स, कुछ पैराग्राफ, उसको आप फिट कर सकते हो कहीं ना कहीं अपने मेंस के आंसर में, और मे बी इन योर एसे, कई एसे में। आई वाज जस्ट वंडरिंग, लेट मी जस्ट सी कि आपका इकोनॉमिक पॉलिसी में, आई वाज जस्ट वंडरिंग क्या एसे आया अब तक। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, ये जो आप इकोनॉमिक्स के एसे लिखते हैं ना, वहाँ भी इसका यूटिलिटी होगा। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, आई हैव टू चेक। मुन्ना, just a minute. Previous year. See, the exercise which I am doing, you also have to do the same exercise. Now I am investing time. Okay, we are going to invest some time. This whatever you will write, how you can use it in your mains answer sheet or essay copy. So let me see यदि कुछ इकोनॉमिक पॉलिसी कोई ऐसे आया अभी तक तो। एक 2017 में कैसे था, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया। जस्ट एवरीवन ओके? 2017 में ऐसे था, इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक मेजर्स ऑन फिस्कल टाइज बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। इन 2017 में तो मेनली वो जीएसटी वाला जो चेंजेस आए थे, राइट? जीएसटी में जो चेंजेस थे उसका क्या इम्पैक्ट होगा स्टेट और यूनियन के रिलेशन पे, उस तरह का। लेट मी सी, और ओके ये हो गया। नाउ ओके, सी दिस ऐसे, कैन देयर बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक जस्ट अ मिनट, कैन देयर बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। Okay, this is the essay topic. It came in 2020. There can be no social justice without economic prosperity, but economic prosperity without social justice is meaningless. So in this kind of essays also, you can put these thoughts. Okay, fine. So now I hope you will do this exercise. See, try to understand why I have done this exercise. Again, last में marks कहाँ मिलने हैं, या तो mains में या essay में। तो यू विल whatever you read, whatever you do, प्लीज एंड प्लीज, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, इवन एक आर्टिकल पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर का, एक कोई लेक्चर भी देख रहे हो, हमेशा अपने से क्वेश्चन पूछो कि ओके ऑल दिस थिंग आई हैव टू राइट 3500 वर्ड्स इन मेंस, और ऐसे में आपके 1000 वर्ड्स, राइट, 2000 वर्ड टोटल, कहाँ मैं उसको यूज कर सकता हूँ। दिस क्वेश्चन शुड कीप ऑन रिवॉल्विंग इन योर माइंड ऑल द टाइम। तो ये जब रिवॉल्व होता रहेगा ना, तो कुछ भी आप, इवन जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो ना, कुछ भी, see why I'm saying this thing, if this thing is deep, this idea is deep embedded in your mind, आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो, इवन कोई मूवी भी देख रहे हो, तो आप उससे भी कनेक्ट करोगे, राइट? ऑल द मूवी में ज़्यादा टाइम नहीं देना, लेकिन वो आप जो इकोनॉमी में चल रहा है उससे कनेक्ट करोगे। तो माइंड को हमेशा किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है,
Now we will start the topic, new economic policy. What happened? India got independence in 1947. After that, we followed 5 years plans. India followed almost Hindu rate of growth. It is called Hindu rate of growth. So it was less. It was not very high. But again, you have to be cautious. You must have read that, Hindu growth. You have to be cautious. See, the growth rate was less, but there was high variability. You understand variability? Let me show you some data. This data was written by former planning, Niti Aayog chairman. He writes about, okay, just see this carefully. In 1952, growth rate was 2.8. Okay, 2.8. Right? This is real. This is not. This is real growth. This is not nominal. But in 1953, it was 6.1. Okay, 1956, 55 again 2.6, then 56 2.7, then 1964 growth rate was 7.6. Can you imagine? Although we are calling that period Hindu rate of growth, but the volatility was high, variability was high. Okay, and you must have read India faced in 1999 a severe crisis, right? There was not sufficient money to pay for the imports. So then they took some economic measures, mainly in the form of liberalization, privatization, and globalization, and those are generally called new economic policy reforms. Okay, but the story is not so simple. आप इस तरह सोचो कि मान लीजिए आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे लिखना है. ओके, तो आपका सबसे पहला काम होगा, फर्स्ट थिंग, जो आपका एनसीईआरटी का चैप्टर है, क्लास 11th का एनसीईआरटी 11th न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, राइट? वहां से जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की जो डेफिनेशन है, वहां से ऑलमोस्ट कुछ पैराग्राफ ले लो और अपने नोट्स में डाल लो. Okay, so try to write the very similar definition in your mains or in essay when you talk about liberalization, privatization and globalization. Globalization की तो आपकी और NCERT में, लेकिन liberalization and privatization के बारे में you will write down the paragraph from there. So please note down few paragraphs first. See what is the point of this exercise. When you will write, read and write like this, naturally your writing style will become. Write down. In the late 1980s, the government expenditure began to exceed its revenue. The government expenditure began to exceed its revenue by such large margins that meeting the expenditure through borrowings became unsustainable. Okay. Foreign exchange reserves declined to a level that was not adequate to finance import for more than 2 weeks. Then India approached the World Bank. उस समय IBRD था, right? IBRD, the part of International Bank for Reconstruction and Development. Okay, India approached World Bank and IMF and received a $7 billion loan. $7 billion loan. ठीक है? To manage the crisis. Fine. To manage this crisis, international agencies. What international agency? World Bank and IMF. They expected India to liberalize and open the economy
by removing restrictions on the private sector, reduce the role of government in many areas, and remove trade restrictions. Okay. अब लिखिए. Now this point you must write out. When you define NEP, national, see NEP is so important. Not only your GS economy, आपके ऐसे में नहीं, इवन आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखो ना डिफरेंट, जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है, मैनेजमेंट ऑप्शनल है, पावर्ड में भी, वहाँ पे भी उसका ना उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं. दिस इज सो इम्पोर्टेंट, यू नो दिस थिंग. So let's say you will write the NEP, that is new economic policy, consisted of wide-ranging economic reforms, the thrust of the policy was towards creating a more competitive environment, removing barriers to entry, ठीक है, barriers to entry, etc. Okay. Now, see, इतना तो ठीक है, तो जनरल चीज है, इतना तो I think you must be knowing. Now, see, there is some point which will attract the attention of examiner. Then see, if you mention this, that NEP consisted of two kinds of reform. One is stabilization reform and structural reform. Okay. Try to write this this thing somewhere in a copy, that NEP 1991 consists of two kinds of reforms, stabilization and structural reform. Stabilization reform were short term in nature, right? They were short term in nature. So why short term in nature? Because India was facing that balance of payment crisis. To overcome that, to how to manage forex, forex exchange rate. So that is the short term measures. Fine. That can become the part of stabilization measure. Structural measures were the long term reform to overhaul the economy. And within structural reform, you study three things. What do you study? Structural reforms में you study LPG, liberalization, privatization and globalization. Fine. Okay. Now I assume let's say NEP पे कुछ आपको किसी मेंस में कुछ लिखना है, तो एक तो आप ये फ्रेमवर्क यूज करोगे, दैट NEP है टू काइंड्स ऑफ रिफॉर्म. पहले तो सिंपल डिफाइन कर दोगे, राइट? सी, वन मोर थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. When you write, let's say you have to write an introduction for mains किसी क्वेश्चन के लिए, तो उसमें एस्पिरेंट के 3 लेवल के थॉट्स होते हैं. ये तो एक लेवल होता है कि जो कि क्वेश्चन था उससे कोई रिलेटेड है ही नहीं, राइट? इसमें तो कुछ भी लिख दिया. ओके, दिस लेवल इज डिफरेंट. फिर एक थोड़ी प्रिपरेशन किया, एक लेवल 2 आता है, राइट? ओके, लेट मी कॉल इट लेवल 1, नीचे जिसमें कुछ नहीं था, यानी कुछ भी, यानी जो पुराना बैकग्राउंड था उसी को ही लिख दिया. लेवल 2 में क्या होता है? एस्पिरेंट माइट गोज इनटू फैक्ट्स कि ओके ये चल रहा है, करंट में चल रहा है, राइट? ये न्यूज़ चल रहा है, तो ये भी लेवल 2 पे है. यहाँ पे जब इस तरह के थॉट होते हैं तो इकोनॉमिक्स में 90-95 स्कोर आता है. एक थॉट होता है लेवल 3 जो तो टॉप है. उसमें क्या होता है कि उसमें यू डू नॉट गो इनटू फैक्ट्स और समथिंग, यू ट्राई टू राइट ए वेरी सिंपल एंड सोबर स्टेटमेंट. लेट्स से द वे NCERT हैज रिटन, right? How they defined, how they defined this thing, economic policy. They said, just a minute, yeah, wide-ranging NEP consisted of wide-ranging economic reforms. The thrust of the policy was towards creating a more competitive environment. Can you see? इसमें कोई फैक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह का आपको लैंग्वेज अपने उसमें लाना है. It will take time.
बट कीप ऑन टेलिंग योरसेल्फ व्हेनेवर यू आर राइटिंग आंसर्स और कुछ भी लिख रहे हो ना, आप यदि आपको थॉट्स पता भी है कुछ करंट का, उसको ना, उसको ज़्यादा सुपर इम्पोज मत करो, उसको ना हमेशा आंसर को इस तरह लिखो कि वो बिग पिक्चर कैप्चर करे, ठीक है, फाइन, ओके, ठीक है. Now let's say you have to write, you must also note down the definition of liberalization. Write down, liberalization measures were introduced in 1980s in areas of industrial licensing, export import policy, technology upgradation, fiscal policy and foreign investment. Okay. Liberalization was introduced to put an end restrictions which were hindering the growth of the economy. Anyone? Okay. What is the difference between, let's say you have to write in 10 words, what is the difference between liberalization and privatization? Any idea? How, what is the key when you say there is a difference between liberalization and privatization? What is the difference? In privatization, what you do? You transfer the ownership to government, government assets are transferred to private sector. But in liberalization, that is not the, but there is just a removal of restrictions. So there is no transfer of ownership. Okay, complete transfer. Privatization is complete transfer. Wonderful, right? So what happened in liberalization? There was deregulation of industrial sector. Okay, when you talk about liberalization, deregulation of industrial sector. See, when you say deregulation of industrial sector, what it means? What was happening? Many industry were, they were the license raj. Okay, so and one cannot denigrate, criticize license raj. There was also some, in particular industry there was needs. For instance, some sectors were reserved for the small scale industries, right? Small scale industries, and that was the need of the time. In fact, many economists are nowadays criticizing that small scale industries are suffering since 1991 reform. Okay, so this this license raj, you should not read it in a negative sense, although something was not very positive, but right. Okay. Second was financial sector reform. In this, what happened mainly? RBI became from a regulator to facilitator. Okay, so this is one thing. Tax reforms were there. Okay, so what is happening since 1991? If you observe, more or less, you can say there has been the reduction in taxes on an individual. Okay, let's say when you read economic survey, so where do you get where India gets maximum tax share? From corporate taxes, right? Corporate tax almost that is the highest. It is even more than your direct and indirect taxes. Okay, so individuals पे जो tax rates है, that is gradually reducing. So this has been the trend since tax reforms. Foreign exchange reforms.
Okay, now once you say, maybe I think it's mentioned, this point you must know, foreign exchange reforms है, उसमें mainly क्या हुआ है आपका, many country what they do, they try to devalue their currency. Why they try to devalue their currency? Let's say some country is in the liquidity trap. Liquidity trap, you understand? What is liquidity trap? Any idea? When the interest rate is 0, okay, even if the government will increase the, see, when the interest rate is 0, nominal interest, you know this thing, nominal interest rates can never be negative, right? Their minimum value could be what? Their minimum value could be 0. Okay, so they can never be negative. Real rates can be negative, right? Inflation effect. Suppose your inflation is negative, right? So real might be negative, but your nominal rates will always be 0 or positive. So what happens in a liquidity trap? Interest rates are 0. So what the people's expectation would be, that interest rate, let's say interest rate is 0 at present. So you know the interest rate cannot go down, right? It cannot be negative. So people will expect that interest rate will always rise. Okay. So when the interest rate rise, as we discussed in the previous lecture, the investment in the economy will go down. Because why the investment will go down? Because let's say if the interest rates are high and people borrow something to invest, the borrowing cost would be high and the project would not be profitable. So you have to understand this thing. When the expectation of the public or investors is that the interest rate is going to increase, so whatever major central banks or in the case of India, RBI takes to decrease the interest rate, those measures are not going to be effective. Got it? Those measures are not going to be effective, and that's why economy is in liquidity trap. So there are many measures to come out of the liquidity trap. One of those measures is devaluation of the currency. What is the meaning of devaluation of the currency? You depreciate your currency. When you depreciate your currency, what will happen? Your exports will become less expensive, right? Let's say 1 USD is equal to $1 is equal to, let's say, 80 rupees, right? Rupees 80. You depreciate it. Depreciate means how much it's make? 100 rupees. Okay, what same dollar. This is depreciated, right? Now it is depreciated because now in 1 USD you are getting, against USD you have depreciated. This is condition 1. This is condition 2. In condition 2, what has happened? Rupee has depreciated and the dollar has appreciated. So now in $1, let's say export payment is happening in dollar. So in $1, the importing countries, so let's say somebody is exporting from India, the importing country can buy more goods. Okay, so the exports will become cheaper. So this way India's export might increase, but there is a problem. And see, itna to I think you must be knowing already कि ये सब होता है, right? But there is something which if you write in mains copy, that will help you, maybe that will attract the eyes of examiner. You will say like this: you have this policy that depreciation of the currency is one way of coming out of liquidity trap, and such was also the such was one of the reform taken during the new economic policy. But let's say if this policy is effective only when, see what I meant to say, let's say if there are 3 countries, Japan is there, USA is there, and India is there, and just imagine a world economy in which only 3 countries are there. If 3 of them started depreciating their currency all at a time, will this policy work?
No, right? So this is, this is not zero sum game. It is kind of a zero sum game, right? Somebody's gain is somebody's loss. So try to raise this point whenever you write. Let's say you are making some point to come out of liquidity trap. People are depreciating their currency. Countries are depreciating their currency. All those things have happened. All that is fine, but you will say this policy is effective only when when in a very in a very peculiar situation. In all situations we cannot take up this policy. Okay. Okay, now let me see. So ठीक है, इस तरह के आई एम होपफुल you will read this chapter given in class 12th NCERT. आप ऐसा कर सकते हो. You can also note down the definition of privatization. Privatization, right? Whenever आप इसी रूल बना लो. Whenever you are writing something about privatization, any definition, उसको imbibe कर लो, right? Inculcate कर लो definition को. You are going to write this definition in UPSC. Okay, वहाँ पे 3500 words ही लिखने हैं. इसको लिख करो. And that is the it implies shedding of the ownership or management. Privatization implies shedding of the ownership or management of a government owned enterprise. Shedding of management or ownership, okay, of a government owned enterprise. A government entity can be converted into private entity by two ways. One is by completely outright sale, another by transfer of management. Okay. Now ये तो आपको पता होगा. इसमें आप एक जनरली कंसेप्ट आप ऐड कर सकते हो somewhere, which I believe might have, should help you. Anyone knows the कहीं आपने पढ़ा भी होगा, right? NCERT में what is the agency problem? And most important question is, you might have heard question like this. Let's say what happens in public sector undertakings. Senior administrators, they are appointed as directors or of PSUs. Okay, you must have observed this thing, and this is a problem. They say this leads to agency problem. Any idea what is agency problem? Agency problem is used in different contexts. Even it is used between borrowers and between bankers, right? It is also used in employees. And what is agency problem? Okay, yes, Vijay. What you are saying, Satish? When capital is there, but people do not interested in investment. Okay, right. ठीक है. But बताइए, what is agency problem? See what happens. Try to understand this thing. This is an important concept. You must know. Let's say government is there, right? Government has its own airline. Let's say Air India was there. Okay, and government का ही Airport Authority of India है, right? Airport Authority of India भी there है, and Ministry of Aviation भी there है, Ministry of Aviation भी there है, and Air India भी है. So the regulator, okay, regulator भी वही है. Okay, do you understand what is the problem is arising? The same entity is becoming regulator, operator. So these kind of things happen, and this leads to agency problem. How it is leading into a PSUs? Let's say, what is the role of board of governors? When you write, what is the meaning of board of governors? Board of governors is a link between managers and employers, right? Shareholders. Okay, always remember this.
बोर्ड ऑफ गवर्नर सी वो लगता है, इनफैक्ट आप देखो ना जो पीएसयू किसी भी उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, नाउ डेज दे आर राइटिंग बोर्ड ऑफ गवर्नर ऊपर और नीचे सीएमडी. You know that the organization structure has changed when you go on website, or you know this is worldwide happening. The board of directors, board of governor, ये ऊपर आपके टॉप पे आता है. So they are a link between your employees and manager. So how? See, because manager itself has a, managers also lead to agency problem, because why managers are paid? How managers are paid? A manager would be paid just to maximize the wealth of shareholders, right? That is the duty of the manager. Because see, let's say there is a firm, you start like this, there is a firm and having 100 shareholders, and this firm is ABC, and shareholders 100. So who are the owners of the firm? No doubt shareholders, but these shareholders cannot themselves run a firm. To run that firm, they will need what? Some managers, right? So managers will get salary. And what their objective would be? To maximize the wealth of shareholders, right? This is, you know, this is their duty. It is their duty to maximize, but sometimes there is a conflict between maximizing the wealth of shareholders and interest of managers as well. Let's say managers want more perks, privileges. Okay, they want more perks, they want more privileges, more salaries. And how they are going to get that salary? From the revenue and income which is being generated. So if they try to maximize their revenue and their income, it will lead to the less wealth creation for the, okay. So to regulate this thing, there is another body called board of directors and board of governors, right? They are linked between shareholders and employees and managers. Okay, so what is happening in board of governors? Let's say there is a government body, so government PSU is there. So who are the owners of government PSU? Public, right? If the government PSU or any government organization, who is the owner? Public, right? And in that, if somebody is putting, you know, let's say administrator or any government official into the board of governor, who has to be an impartial body. So it again leads to the, do you understand why it is leading to agency problem? Because again, the duty of this administrator who was in the board of director, board of governor, was to be impartial. How he or she can be impartial? Because he himself is a part of a state. Okay, so try to mention somewhere, you know, if you can mention this agency problem, you can explain it, or okay, here when you talked about manager, you can talk about two more keywords which you encounter in newspaper. Have you heard golden parachute? You while reading newspaper, do you observe this term golden parachute? Okay, maybe next time when you read, you know, maybe sometime you see what happens when a firm is being overtaken by another firm. Let's say there is a firm ABC. Okay, sorry, ABC, it is overtaking XYZ. Okay, recently Elon Musk took over Twitter, right? So what happens when you overtake any firm? You will observe, you know, when you read newspaper, economics newspaper, try to observe this thing. When this is, let's say, overtaken, and this is overtaking. तो किसका शेयर वैल्यू ज्यादा इंक्रीज होता है? When this thing happen, have you observed किसका शेयर वैल्यू इंक्रीज होता है? Overtaking or overtaken? Generally, you know, in 99% cases, the overtaken firms, some firm which is being acquired, उसका शेयर वैल्यू राइज होता है. क्यों? Otherwise, you know, why? No, जो ओवरटेकिंग है उसका जनरली डिक्रीज होता है. See, you have to no, just Vijay, be clear. No, see, although it might look paradoxical, see what is happening. ABC is overtaking XYZ. For ABC to overtake XYZ, what it means?
फर्स्ट मे बी लेट्स से XYZ के कुछ शेयर होल्डर्स थे, कुछ प्राइवेट होंगे, राइट, रिटेल इन्वेस्टर्स, राइट, बहुत सारे, मान लीजिए इसमें वो 20% थे, मान लीजिए उनके पास 80% शेयर है, कुछ यानी में कुछ एम्प्लॉयज़ के पास है 10%, बाकी कुछ इंडिविजुअल्स हैं उनके पास 10% है. तो ABC can overtake XYZ only when, let's say there is a annual general meeting, okay, and in that meeting ABC proposes that we are going to overtake XYZ. So they will say, if you overtake, we are a running firm, if you overtake us, why we will allow you? They will say, because we are providing you some excess return on your share, right? Let's say इसकी जो वैल्यू है, इसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1 billion. They will say, okay, we will offer you 1.1 billion. So immediately this 80% retail shareholder, they will say 10% कहाँ रिटर्न मिलने वाला है, right? So they will immediately say you can. So always remember, the overtaken firm जिसको एक्वायर किया जाता है उसके शेयर प्राइस राइज होता है जनरली, इन द इमीडिएट फ्यूचर. जो इमीडिएटली आप देखोगे न्यूज में, जो ओवरटेकिंग है, जो एक्वायरिंग है, उसका शेयर प्राइस रिड्यूस होता है. नाउ समबडी माइट आस्क, तो लेट्स से दिस इज ओवरटेकिंग, तो वेल्थ कहाँ से क्रिएट होगी? अदर यदि इसका शेयर प्राइस रिड्यूस हो रहा है, इसकी वेल्थ रिड्यूस हो रही है, तो व्हाई दे आर गोइंग टू ओवरटेक इट? So what is the crux is that this firm thinks or believes that there are some synergies between operation, marketing, or research, and we will capitalize on those synergies over a period of time. Got it? Maybe मान लीजिए इनका भी while overtaking 0.1 billion का लॉस था for this firm, but by synergies this firm will acquire more. Fine? Everyone okay? So see, try to, when you read newspaper ना, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व किया कीजिए इस तरह का. So this is what, so you have understood agency problem, and okay. So let's say न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में आपको 200 वर्ड्स का लिखना है, 2 पेज अपना नोट्स बनाना है. तो स्टोरी क्लियर है? यू विल स्टार्ट विद एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वहां से पैराग्राफ निकाल लेना है, लिबरेशन का डेफिनेशन, प्राइवेटाइजेशन का डेफिनेशन और उसका, ठीक है. देन यू विल टॉक अबाउट मेनली अबाउट स्टेबलाइजेशन, जो रिफॉर्म थे उसमें स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में आपके लिबरेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके. देन यू हैव टू कंसेप्ट एजेंसी प्रॉब्लम, राइट, एंड दिस थिंग which you might somewhere use. ये concept तो है. I observed this question, how why this agency problem due to government officials in the board of PSUs. ये एक important question है, okay. ये आप कहीं ना mention कर सकते हो, ठीक है. Now let's say Dr. Arvind Paragnia, right? He was I think earlier at Niti chairman. He had written something about national economic reforms. So he is trying to drive a story. What he is, what he is trying to say indirectly, that the story is not so clear. What we studied that 1991 में balance of payment crisis थी, balance of payment crisis, and India took reforms. New economic policy reforms, economic policy, and then India moved to high growth trajectory. He said, no, the story is not so simple. What he is trying to say, and see, when people go into details, the story become more clear. So India में जो growth rate है, just you saw that during 50s, 16s, 70s, the Hindu growth rate was falling, but the volatility was high. Right? Sometimes you observe 7.6, 7.8% also, but the reforms, main reforms started in the decade of 19, in this decade, okay. This was just one moment. So the main reform started with in 1980s. Now you can write one paragraph, please. Just a minute.
Okay, the policy changes in the mid and late 1980s were sufficient under the last government. Sorry, in the mid and late 1980s were sufficient to start the acceleration of growth right. Now, see one, either I can read that paragraph or yes. See what this Dr. Arvind Pragnya, he is trying to make a point. The reforms was already happening in 1980s as well. Okay, the reforms, this move towards liberalization, privatization, this was happening even in the 1980s. It is not just that it happened after the balance of payment crisis. No. But the point he's trying to drive is the attitude change in the government officials. That was the important point. That was the important characteristics of this decade. Reforms were already happening. Let's say you bring some policy, you bring some tax reforms, everything. He is putting those reforms at the second level. What he said, the most important thing was the change in the attitude of government official. Okay, so try to write down this point. Okay, so okay, you can write this line. The change in official attitudes in the 1980s. The change in official attitudes in the 1980s towards encouraging rather than discouraging entrepreneurship activities and integration into the world economy and a belief that the rules of the economic game had changed for good may have had a bigger impact on growth than any specific policy reform. See, now it likes a simple statement, but who is writing this statement? Niti Aayog chairman, right? Not even CEO, chairman, who has invested almost 50 years of his life in economics, who knows the India's economy inside and out. Try to write this line somewhere. What the point is trying to drive? Attitude change. The change in the behavior of official was more important than any specific policy reform during the 1980s and 90s. That's why when you GS4 you write now, democratic attitudes are required. Okay, so you write those things. So this is very, very important. How do you sensitize public? How do you make Swachh Bharat Abhiyan success? How do you sensitize people against not to do violence against women? Only through attitude change. So try to write this line somewhere in your economic answer sheet, that economic reforms of the 1980s they were fine, but attitude change of the official were also very, very important. Okay, Akhil, regarding this golden parachute. Okay, I did not explain golden parachute, right? Golden parachute means let's say some ABC is acquiring XYZ.
तो ठीक है, ओके, दिस इज वेरी फनी, आपको नाम से ही मालूम पड़ रहा होगा, गोल्डन पैराशूट. What it is? Let's say ABC is acquiring XYZ. So you know what will happen? Gradually the managers of, owner of ABC will say, managers of XYZ, now it's time to go home, right? It generally happen, right? They will change the management structure and everything, and they can do because the ownership has been transferred. And they would also try to change the organization structure, culture, everything. So, and they know, the managers of XYZ know this already. So they will put this thing in the, let's say, in the policies of the company, right? In the rules that if any firm overtake us, we are going to get so and so much compensation, right? So even if they are fired, they will, they will fly in parachute, golden parachute. Now you understand the meaning of golden parachute? So yes, sir. Now, Akhil, you mentioned writing. Okay, writing about where you can mention. See what happened. Let's say there's an economics option student. See, when you write GS answer. Okay. Let's imagine you are going into main, examination hall. How your mind will consist? In आपके mind में जो आपके GS 4 पेपर की preparation है वो होगी, optional होगा. Is it possible to segregate optional from your GS पर? जब मेंस में बैठोगे वो 3 घंटे में 20 आंसर लिखने हैं, पॉसिबल है? नहीं. जो मैथमेटिक्स भी ऑप्शनल है उसको देखोगे, उसके भी आंसर जीएस आंसर में कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आ जाता है, उसकी वॉइस में वो सेग्रीगेट नहीं कर सकते. तो वॉट एवर ये मतलब कोई हिस्ट्री का ऑप्शनल है, उसकी जीएस के आंसर में वो हिस्ट्री वाली चीज रिफ्लेक्ट होगी. तो व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज रिगर एंड कंटेंट. 2 चीजों पे ध्यान रखना है. एक तो कंटेंट बहुत ब्रेविटी वाला हो और दूसरा रिगर. तो इफ यू कैन यूज वर्ड्स लाइक दिस विद सम थॉट, जैसे एक तो है कि मान लीजिए आपने मेंस की आंसर शीट में लिख दिया जस्ट एटीट्यूड चेंज. क्या सोचेगा प्रोफेसर, क्या लिखा है ये, राइट? यू विल इवन लुक एट दैट आंसर. बट इफ यू टेल द स्टोरी, इफ यू राइट अ कन्विंसिंग स्टोरी कि ड्यूरिंग 1980s 90 दिस वाज द प्रॉब्लम एंड दिस एटीट्यूड चेंज, वो आपके आंसर में उसको रिफ्लेक्ट हो जाए कि ओके दिस एस्पिरेंट नो समथिंग, ही हैज अ गुड बैकग्राउंड. तो वहां पे जब आप एटीट्यूड चेंज वाली जो अभी हमने जो स्टेटमेंट बोला है, देन इट विल सेंड ए वेरी डिफरेंट इंप्रेशन. ठीक है, ओके. तो वही कर आप कुछ भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, वो डिपेंड करता है क्या डेप्थ है और क्या ओके कितना उसमें कंटेंट है. नाउ please write down one more, some just write down few paragraphs. The growth during the 1980s was higher than in the preceding decades. So it is fine, so during 1950s to 90, इससे तो ज़्यादा थी, 1980s में इसमें ग्रोथ ज़्यादा थी, बट इट वॉज फ्रेजाइल. फ्रेजाइल का मीन्स हाईली वोलेटाइल. It not only culminated in a crisis. So due to this fragility, okay, do you understand this? Okay, why am I emphasizing this point? ऐसा नहीं कि हिंदू जो ग्रोथ रेट था उससे तो बाहर 1980s में ही गया, but it was fragile, it was volatility. So when you say volatility, try to understand this thing. We do not prefer high volatility in market. Let's say even individuals को देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई asset है, मान लीजिए there are 2 assets, asset A and asset B. उस पे रिटर्न है, ये है रिटर्न और ये है रिस्क. लेट्स से इस पे रिटर्न है 15% और रिस्क है आई एम कॉलिंग 10%. ओके, इस पे रिटर्न है 16% एंड रिस्क है 20%. विच वन यू विल प्रेफर? एनी आइडिया विच वन यू विल प्रेफर? A, right? See, although return is less, but here risk is also less. So this means you are risk averse. This implies you are risk averse. And generally people, see, इसके वो बहुत theory है. Generally, consumers are risk averse. There are 3 kind of consumers. They are
risk seekers, risk averse, and they are risk neutral. Okay, so why I'm trying to, इस पे प्रोफेसर डेनियल कैनेमैन, you know, he wrote did a work in prospect theory. यहाँ पे इकोनॉमिक्स और आपका साइकोलॉजी कनेक्ट होता है. So you have to understand, even when you observing the growth rate was high, you know, was high, but it was high volatile, and due to this volatility, India faced a crisis in June 1991. Okay, okay, see, मान लीजिए आपका, आपने ये मान लीजिए सपोज कीजिए, एक ये भी हो सकता है कि आपको मिलेगा 50% रिटर्न और रिस्क है 99. ओके, ये हो गया तो ठीक है. अदरवाइज इफ डज नॉट हैपन, so what is going to happen? Crisis is going to happen, right? So that's what happened in June 1991. India faced a economic crisis. Okay. Growth during the 1980 was also propelled by fiscal expansion financed by borrowing. Fiscal expansion financed by borrowing. क्या प्रॉब्लम है इसमें बताइए? When I say fiscal expansion financed by borrowing. Okay, let's say any government has three ways of raising money, either by taxation, either through by borrowing or through printing money. तीन तरीके होते हैं गवर्नमेंट के पास. Now you must also know a concept called financial leverage. You know, अभी आया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ. You know, financial leverage, and you will, in fact, आपने जो एनके सिंह कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें तो इन्हें दे मेंशन्ड इट. इंडिया की ये है, you know, उन्होंने क्या बोला? डेट इज द एंकर. डेट इज द एंकर. If you understand this concept, N.K. Singh committee came to review the FRBM Act. Okay, you remember FRBM Act? FRBM Act था, उसको रिव्यू करने के लिए कौन आया? N.K. Singh कमेटी. FRBM क्या है? फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. व्हाट इज द फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि आपको फिजिकल डेफिसिट इस टारगेट में रहना चाहिए उसमें. What this committee, now you have to understand, you know, इसमें प्रोफेसर उर्जित पटेल भी थे, and you know, डॉक्टर एनके सिंह का भी, you know, he was a senior IAS officer. So now what they are recommending to repeal this act को. Why? What they are saying that what is the problem of India is India की new problem क्या है? Debt. Debt is the problem. Now debt is the problem, and you understand, it is also apparent when you see the budget. अपना एक्सपेंडिचर का 17-18% किसमें जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट में. वो तो उसी, इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? उसको किसी तरह कर्टेल करें. नाउ ही सेड दैट इज द, सो उन्होंने क्या बोला कि इसको फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी कटा के डेट मैनेजमेंट एक्ट वी हैव टू इनएक्ट. बट लेट्स से ऑल दिस इज फाइन. समबडी हैज टू आस्क व्हाई इंडिया गॉट इनटू दिस डेट ट्रैप. Why India got into this debt trap, right? Almost India now अभी भी ऑलमोस्ट डेट ट्रैप में ही है. क्योंकि आपका 17 to 18% कहाँ जाता है? इंटरेस्ट पेमेंट में जाता है. और आपकी जो फ्रेश बोरिंग्स होती हैं इंडिया में, फ्रेश बोरिंग्स ऑलमोस्ट आप देखिएगा 15-16% है. कहाँ, किधर से मैक्सिमम पार्ट है बताइए? विच, व्हाट इज योर, फ्रॉम वेयर यू गेट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ बोरिंग्स? See, this question has been asked twice in prelims. Twice. क्या क्वेश्चन था? एक तो इंडिया का जो डेट है, जो फॉरेन डेट, दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड. इंडिया का कोई फॉरेन डेट नहीं है. मेनली डेट क्या है? डोमेस्टिक डेट है. एंड विद इन डोमेस्टिक डेट व्हाट इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ योर डेट? एनीवन? See, I think it's, you know, it's a simple question. Treasury bills, right? Short duration treasury bills. Treasury bills, yes. Treasury bills. Treasury bills. See, these are basic. You must know. प्रीलिम्स में 2-3 बार फोकस उन्होंने पूछा है यूपीएससी ने, बिल्कुल क्लियर कट.
जो इंडिया का जो फॉरेन डेट है, यानी जो टोटल डेट है उसमें फॉरेन जो पार्ट है बहुत लिमिटेड है। इंडिया की जो डेट है मेनली क्या है, शॉर्ट टर्म है, एंड इट इज मेनली फ्रॉम द ट्रेजेबल। ट्रेजेबल्स कैसे होते हैं, 30 डेज 90 डेज, राइट। तो अभी जनरली क्या करता है, सी व्हाट द जनरली बैंक का रोल क्या है, बैंक डिपॉजिट्स लेती हैं और उसमें लोन देती है, राइट। तो दे ट्राई टू रोल ओवर द डेट। रोल ओवर द डेट का मतलब समझते हो, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी को किसी से मान लीजिए पैसे लिया, ओके, समबडी किसी ने डिपॉजिट किया कस्टमर ने, the customer says I want this back in 1 year, okay. Another customer came, he said I want this back in let's say 2 year, okay. So what the bank will, they will roll over, उसको roll over करके किसी इंडस्ट्री को लोन देंगी for 5 years. So the maturity, that the maturity period has to match. यदि वो maturity period match नहीं हुआ तो उसमें भी liquidity crisis आ जाती है। तो okay, this story is clear, ये तो हम और किसी लेक्चर में देखेंगे, but the important point I want to raise, why India came into this debt trap. You study you remember the last statement, during the 1980s the fiscal expansion was happening through borrowing, okay. When you borrow something and do not, let's say, ऐसा भी नहीं है कि borrow करके नहीं, so let's say if you borrow something and you invest in social infrastructure, okay, social sector में you establish health, hospitals, education, right, उसका फिर भी meaning है, because after a generation that they will come back. And even if let's say okay, let us take this point further. Let's say India took borrowed a lot, or even student, let's say students are borrowing for education or for UPSC preparation or something like that. That's not a problem. You know what is happening in US economy now? Almost US economy $1.1 trillion is student education loan, right? It is almost half of Indian economy, right? Which half ही हो गया, and now they are forgiving it. Can you understand? See, this is the human psychology. कहते हैं कि okay, see, student took, they took money for some important thing, they invested in education, they invested in time, so they did not just spend their way to by borrowing, they invested that money in some good part, so that forgiveness is fine. So but let's say if some country keep on borrowing and they go into debt trap, then it becomes problematic, and that is what has happened with India. Maybe some industry did not work, some investment in social sector was not sufficient, something, many problems, maybe to fulfill some obligation, that is fine. But the relative concept of financial leverage, which you must know, financial leverage, what it says, see, even reading the newspaper you will encounter it. Indian economy is also highly leveraged. What happens? Let's say, imagine this thing. There is let's say somebody has to start a company ABC. Okay. इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ इक्विटी डाल सकते हो, कुछ डेट डाल सकते हो, ठीक है. You understand, everyone understand equity and debt. Let's say equity is 50 rupees and debt is 50 rupees. Fine. Total value of the firm हो गया 100 rupees. इसकी जो कॉस्ट है इसको लिखते हैं वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट, ओके. इसका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये मान लीजिए 10% है, ठीक है. फाइन, everyone scenario is fine. Let's say you invest in 100 rupees and the market return, the return which you are getting, that is 20%. So on investing 100 rupees, how much you got? 20 rupees. Okay, 20 rupees you got, because the total value is 100, you invested, the market return is 20%, you got 20. How much you have to pay back to banks as a loan? 5 rupees. So out of 20, how much is going? 20 out of 5, because see, 15 rupees will go to banks for interest payment, and see, interest payment is very, very important. Even India's interest payment are charged on what? Consolidated Fund of India, right? You remember? जो
जो इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं वो दे आर चार्ज, दे हैव द फर्स्ट, इवन जो शेयर होल्डर से पहले के ना, जो शेयर होल्डर्स हैं उन सबका तो बाद में आता है, राइट? यस, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो यू टू अंडरस्टैंड, तो इंटरेस्ट पेमेंट तो फर्स्ट है. It is called packing order. Packing, to use the technical word, packing order. What is the meaning of packing order? Let's say a company is bankrupt. तो उसके जो असेट्स सेल होंगे उसमें सबसे पहले किसको स्टेक मिलेगा? तो सबसे पहले स्टेक होता है किसका? इंटरेस्ट, जिसने लोन दिया है, बैंक्स का. शेयर होल्डर्स वगैरह बाद में आएंगे, राइट? वो सब बाद में. तो रिमेंबर दिस थिंग. तो व्हाट इज योर रिटर्न? योर रिटर्न इज 15 रुपीज ऑन, एंड हाउ मच इन्वेस्टेड? सी, वो तो 50 रुपीज तो डेट था. ऑन योर 50 रुपीज यू गॉट 15%. So that means 30% return you got. Everything okay? You understood this thing? So in this case, what is happening? Taking loan, taking debt. That means leverage. Leverage is a good thing because your market return, जो market return था वो क्या था? That is was more than your borrowing cost. Everything fine? Now imagine another situation. Another situation, same thing. Here also equity 50. Right? Your debt is, let's say, again 50, and debt rate is 10%. Again, same situation, right? And your market return is only 4%. Okay, fine. 4%. So how much return you will get? You invested 100 rupees. How much you will get? 4 rupees only. And but out of 4 rupees, you have what you have to one has to give interest payment तो जाएगा. तो टोटल क्या है? -1 रुपीज, -1 रुपीज का लॉस. एंड हु इज गोइंग टू बियर दैट लॉस? इक्विटी होल्डर्स. ओके, गॉट इट? सो डू यू ऑब्जर्व व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? व्हेन यू डू द लेवरेज, your return is less than, in this scenario, when the market return is less than the debt rate, उस कंडीशन में आपको लेवरेज नहीं करना है. So I have given you example of a small company. The same thing applies in economy. आप उसको enlarge कर लीजिए. If the market, if country has taken borrowing and if the return is high, then it is fine. If it is not, then it's a problem. Fine. So I'm hopeful somewhere you will use the concept of financial leverage. Okay, and you will try to know something, why that is a problem in India. ठीक है. Now this is okay. Write down this. On the external front, again in 1980s, what was happening in the 1980s? On the external front, policy measures such as import liberalization, export incentives, and a more realistic real exchange rate contributed to productive efficiency. I'm repeating, on the external front, policy measures such as import liberalization, export incentives, and a more realistic real exchange rate contributed to productive efficiency. On the internal front, freeing up of several sectors from investment licensing, reinforced
import liberalization and allowed faster industrial growth. Okay, now ठीक है, यानी आई होप आई होप कि इस तरह तो कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको यानी थोड़े से इसमें से स्टेटमेंट आपको कुछ सकते हो, आपके 3-4 कंसेप्ट हो गए। नाउ ये तो स्टोरी हो गया इकोनॉमिक पॉलिसी का जो हुआ, राइट। ऑल्दो इट इज कॉल्ड न्यू बट इट इज हैपनिंग इन इट हैपेंड इन 1991. Now the question is why India needs a new economic policy. Okay, now अब see इसका जो आंसर है ना, लेट्स से मेंस में तो इस तरह का नहीं क्वेश्चन नहीं है, मान ली आपको इस तरह का आंसर प्रैक्टिस करना है, तो जस्ट टेल मी हाउ यू विल थिंक। आपके जैसे आप ऐसे लिखते हो ना मेंस में, तो ऐसे लिखने से पहले आप लास्ट कॉपी पेज पे जाते हो, यू ट्राई टू ड्रॉ ए स्ट्रक्चर कि ओके आई विल jot down my thoughts. Now suppose somebody asks you reasons for new economic policy, new economic policy for India. क्या रीजन होंगे और क्या फ्रेमवर्क आपके माइंड में आएगा? दैट थॉट प्रोसेस आई एम इंटरेस्टेड। In fact, I will give you one framework. Pastel. Chapter. See what I mean to say. This is a broad-based question. Now you are asking, you are giving reason for new economic policy. So आप मेंस में यानी इसमें एक चीज ध्यान रखना, यानी मान लो सपोज कि कोई आंसर लिख रहे हो तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अपने आपको रिकॉल कराना, ट्राई टू यूज कोई एक फ्रेमवर्क। जैसे पेस्टल में क्या होता है, यू ट्राई टू टॉक अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन। पेस्टल का फुल फॉर्म है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड लीगल। ओके, तो आप हॉलिस्टिकली पिक्चर को कवर करोगे, ये एक एक्रोनिम लिख लो। और उसमें पॉइंट क्या लिखना है, वो तो आपकी जैसे जैसे प्रिपरेशन होती है वो आपको यानी डेवलप होता जाता है ना थॉट, कि पॉलिटिकल क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इकोनॉमिक क्या चल रहा है, बट दिस फ्रेमवर्क यू विल ट्राई टू पुट इन योर आंसर। वहाँ पे पेस्टल लिखने की जरूरत है, बट व्हेन यू जॉट डाउन योर आंसर तो स्टार्ट विद पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रीजन्स, इकोनॉमिक रीजन, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। ओके, ये एक फ्रेमवर्क हो सकता है। नाउ सेकंड फ्रेमवर्क हो सकता है एसडीजीज। जो एसडीजी गोल्स हैं, आपके 17 गोल्स हैं, दे मोर और लेस कवर ऑल द थीम्स। उसमें आपका पॉवर्टी यानी सोशल कॉजेज हो गया, पॉवर्टी वाला हो गया, राइट, हंगर, ओके, या ओके, राइट, या सर व्हाट यू सेइंग विजय, आई एम आस्किंग डाउट। ओके, इंटरेस्ट पेमेंट, it may lead to depletion of forex reserves. Okay, sorry, I was so engrossed in lecture that I forgot to see the comments. It happens, no problem. But anyway, I will see. So, is this fine? See, why this framework is so important? Even जब आप ऐसे लिख रहे हो, when you write UPSC ऐसे कोई टॉपिक पे, अपने बस माइंड को रिकॉल करा लो एक बार, कि जो एसडीजी की थीम्स हैं, उसके जो मेरे 2 पेजेस हैं, 2 नोट्स हैं, मैं उससे चीज़ों को कनेक्ट करूँगा। ओके, तो और एक फ्रेमवर्क हो सकता है जो आपके इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर्स हैं। लेट्स से यू आर रीडिंग लास्ट 2-3 इयर्स इकोनॉमिक सर्वे, उसमें कुछ लेट्स से पहले जनरली फर्स्ट चैप्टर इज द ओवरव्यू ऑफ इकोनॉमी, राइट, देन दे गो इनटू व्हाट इज हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंफ्रा सेक्टर। तो वहाँ से यहाँ से उसको कनेक्ट करके, सी दिस इज सो इम्पोर्टेंट फ्रेमवर्क, why I am trying to emphasize, जो आप जो पॉइंट लिखोगे, जो क्वालिटी ऑफ पॉइंट है, वो ग्रेजुअली तो इंप्रूव होगा विद प्रिपरेशन, बट इफ यू कैन जस्ट रिकॉल दिस फ्रेमवर्क ड्यूरिंग योर, होता क्या ना, जब आप ऐसे लिखते हो, इवन जो यूपीएससी में जब ऐसे लिखते हो, जनरली क्या होता है, एस्पिरेंट लिखते हैं और जब लिखने के बाद कुछ तो रिवाइज ही नहीं, प्रेशर है, टाइम प्रेशर है, कहाँ टाइम मिलता है रिवाइज करने का। बट मेक दिस पॉइंट
लेट्स यूर राइटिंग एसे 1000 वर्ड से, यू ट्राई टू रिवाइज योर एसे आफ्टर 500 वर्ड्स। जब वो 1000 वर्ड लिख लिया है, फिर कहाँ से रिवीजन करके क्या फायदा होगा, कुछ चेंज हो सकता है राइट। सो इवन वाइल प्रैक्टिसिंग what you will do, let's say 1000 words का कोई ऐसे इकोनॉमिक इशू में, so once you have written 500 words or 400 words, that time you revise, क्योंकि जो माइंड होता है ना वो बीच में डिवेट होता है, तो द मोमेंट यू विल उसको रिवाइज करोगे, फिर आप उसमें तुरंत आके इस फ्रेमवर्क को, यानी जो भी आप फ्रेमवर्क यूज कर रहे हो, यानी यू कैन यूज दिस वन और एसडीजी थीम्स और इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर, उससे देन यू ट्राई टू, so now what we'll do, now just tell me somebody, let's say you want to use this any one framework, कोई भी, अरे which one you want to use, and you have to tell the reason for India having a new economic policy. Which framework you would like to use? Let's take SDG ले, ठीक है, SDG लेते हैं, ठीक है, बताइए SDG का why should be, let's say पहला गोल क्या है, no poverty. World cannot fulfill its world cannot achieve the same till India and other developing countries achieve the same. So that's why you will say India will need why, and then you can quote like multi-dimension poverty index report has mentioned that highest number of poor children live in India. So why you need new economic policy reform? New economic policy reform, you can say like this, that social welfare is contingent on economic measures, okay, and to provide employment opportunities, India will need very bad new economic policy reform. Let's say zero hunger, तो ठीक है, इसमें हंगर यानी आपके जो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, एंड जो फर्स्ट 3 गोल्स हैं वो आप एक को सोशो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। देन एजुकेशन, हियर यू कैन टॉक अबाउट एजुकेशन की जो सिचुएशन है इंडिया में। लेट्स से यू हैव अंडरस्टूड रेड एंड जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, नेशनल चाइल्ड पॉलिसी है, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करो, वहां से पैराग्राफ उठाओ, अपने उसमें डालो। जो सपोज यू हैव रेड इंडियन एजुकेशन पॉलिसी, ओके, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, दे टॉक अबाउट दे टॉक अबाउट द क्वालिटी डायमेंशन, एक क्वालिटी डायमेंशन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 आर्ट्स। 3 आर्ट्स क्या क्या है, रीडिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक एंड तीसरा क्या था, रीडिंग अर्थमेटिक एंड एक और था, आप देख लीजिएगा, ओके। आई थिंक पता नहीं क्या उसमें 3 आवर्स उन्होंने बोला है। तो if you have to if you have to move into the education front, you have to invest more in education. Let's say the total investment in education in GDP should be at the OECD level. OECD level, to get that amount of investment, we have to get economic resources. For that, India need new economic policy. To see what I'm saying, why I'm doing this exercise. ये सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज है, वहाँ पे आपके नोट्स रेडी हैं, सब कुछ रेडी है, उसके बाद जो भी फ्रेमवर्क्स आपके माइंड में है उसको किसी क्वेश्चन में कनेक्ट करना, वो एक उसको पढ़ा नहीं है, उसको बड़ा डिफिकल्ट है पढ़ाना, वो दैट इज फॉर एवरी इंडिविजुअल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर विद यू दिस फ्रेमवर्क। नाउ व्हाट यू विल डू, लेट्स से ट्राई टू गिव मी रीजन, climate change. I think it is SDG 13, right? Action on land something. आप ये बताओ how you will connect these 2 dimensions. You have to think and tell empowerment of women, that is gender equity, and climate change. You have to prevent climate change, and you have to promote gender equity. You have to connect these 2 thoughts and how a new economic policy will help achieve these 2 goals. ये सोच के बताओ क्या वहाँ पे, यदि let's say 10 words you have to write in UPSC mains, what you will write. Climate induced migration,
Life on water, yes, sir. Blue icon. Just you know, do this exercise. You have to write 10 to 20 words, 10 to 15 words, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. आपको यानी थोड़ा सा बैकग्राउंड तो पता हो गया, ओके यू नो ये हिस्ट्री था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, आपकी एसडीजी की स्टोरी क्लियर है. नाउ यू हैव टू कनेक्ट दिस थॉट दैट हाउ इंडिया हैविंग ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कैन प्रमोट जेंडर इक्विटी और क्लाइमेट नो some aim of climate change. Anyone? Shiva Prasad, you want to say something? Vijay, you guys can unmute your okay. हाँ ठीक है, इंक्लूडिंग, बट सी दैट इज फाइन, बट सी वो तो ठीक है, लेकिन इसको कनेक्ट कैसे करोगे? जस्ट टेल मी दो 10-20 वर्ड्स. See, on gender equity, you can talk about this. As we mentioned in the previous class as well, you can say gender equity is the goal on which the very success of all SDGs hinges. ठीक है, यानी जब तक gender equity नहीं होगी, we cannot achieve other goals. Then you can say, for gender equity, you have to have economic, social, and political empowerment. Right? For economic empowerment, you have to, you know, let's say you can say. Employment generation, government budget, you know, gender budgeting, right? Those provisions has to come, and those should be included in your new economic policy, creating more employment for women. And this is the way to overcome. See, India में क्या हो रहा है? Feminization of poverty, agriculture, feminization of poverty, right? So आपके फ्रेजेस वही रहेंगे जैसे आपने लेट्स से इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इस वाले इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ा होगा. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ऑफ अर्बन फीमेल इज वेरी लो, ऑल्सो रूरल. सो जस्ट यूजिंग दिस थिंग्स यू विल से you know, for gender equity we have to look after, you know, we have to get better of these you know, dull indicators. And new economic policy should have these provisions. Okay. What about climate change? How you will approach climate change? Clean energy, finances, and technologies. Okay. Let's say you talk about the climate change. ठीक है, एक तो वो एटीट्यूडनल चेंज हो गया कि we will reduce our consumption. You know, उसमें भी एक तो ना कि आप लेट्स से यू आर रिड्यूसिंग कंजम्पशन, वो तो साइकोलॉजिकल हो गया. लेट्स से इवन इफ यू आर कंज्यूमिंग समथिंग, ओके, तो सस्टेनेबल कंजम्पशन होना चाहिए, राइट? क्लीन टेक्नोलॉजीज, और क्या लिखा आपने? फाइनेंसेस एंड क्लीन एनर्जी, फाइनेंसेस एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी एंड इंक्लूड मिशन लाइफ. ओके, यस अनंत, फाइन. सो दिस इज द वे. सी, यदि आपसे कोई बोलता है कि ओके न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, व्हाई इंडिया शुड हैव ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, इसका कोई बहुत छोटा आंसर है और यू नो कोई बहुत ही टेक्निकल पॉइंट है, नो नो नो, दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन. व्हाई इंडिया की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी 1991, उसकी एक हिस्ट्री है दैट यू कैन कवर थ्रू एनसीईआरटीज, थ्रू अदर्स पेपर्स और थ्रू आर्टिकल्स. बट द रीजन इंडिया शुड हैव न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दिस इज ए ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, राइट? दिस इज ए फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन. This question you have to connect with your understanding. For understanding, you will use one of these frameworks. ठीक है? This is what I want to say. Any questions so far? बताइए. आप लोग ऐसा कहिए, you know, you guys should write few answers. और उसको anyhow, I'm okay. I have to check, you know, आप ग्रुप में लिखो. ये आप एक चीज और करो. इनफैक्ट आप ये काम करोगे ना, इकोनॉमिक्स से कितने आंसर्स हैं, पीवाईक्यू कितने हैं? हर साल 8 आते हैं. लास्ट 10 ईयर्स के 80 हो गए. ओके, 80 ये अपना रूल बना लो कि आई हैव टू प्रैक्टिस दिस 80 पीवाईक्यूज 3 टाइम्स. यानी बिल्कुल इम्बाइब हो जाएगा माइंड में. आपका जो माइंड है ना, जैसे एक शिप होता है दैट हैज टू रिवॉल्व अराउंड एन एंकर, उसी एंकर के अराउंड वो शिप रिवॉल्व होता है. वंस इफ यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ यू आर राइटिंग अबाउट पीवाईक्यूज,
स्पेशली फॉर इकोनॉमी आई एम टेलिंग, इसको 3 बार करो और ये हार्डली कितना लगेगा, दिन में आप 2-2 3-3 PYQ भी लिख रहे हो एंड सी दो टू थिंग्स शुड गो टुगेदर। लेट्स से आपने कोई PYQ का आंसर लिखा एजुकेशन पे, एजुकेशन पे कुछ आया है, सी हाउ द प्रोसेस विल वर्क, ये तो कंटेंट क्वालिटी नोट्स नहीं होंगे तो क्वालिटी थॉट्स नहीं होगा, और क्वालिटी थॉट्स नहीं होगा तो क्वालिटी आंसर नहीं आएगा, राइट। दिस इज द प्रोसेस, ऑलवेज रिमेंबर। नाउ लेट्स से यू आर राइटिंग ए PYQ और आपको पता है कि नहीं बनना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट रीड डाउन सम आर्टिकल, सम जनरली इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर पढ़ो, उसको समराइज करो, अपने नोट्स में डालो, उसको रिवाइज करो, तो यू विल सी दैट इटरेशन वो चेंजेस होएगा। और ये हार्डली इसमें कितना टाइम लगेगा, 3 to 4 months में आप ये काम कर दोगे, while continuing your optional preparation and other thing preparation. This will, this is very, very important. Okay. Anant, what you said? Climate change policies in how it can reduce our import dependence on fuel and also create a new market for India. Yes. Okay, now see you mentioned about the dependence on fuel. I give an example. See, ये generally आपके पास आना चाहिए mind में, maybe I mentioned it earlier. You know how much is the India's oil, edible oil import? It's a big, right? Edible oil. ये भी prelims का question था. UPSC is asked in prelims. India has a big import bill for जो crude oil है वो तो है ही है. Edible oil भी also, right? वनस्पति जो है. Because mainly क्यों? क्योंकि इंडिया में वो कल्चर है, राइट? जब तक कढ़ाई में सॉरी आधी कढ़ाई तेल से ना बढ़ी हो, खाना नहीं बनता है. That's a problem. But anyway, you have to try to, you have to even connect the idea. Let's say edible oil का जो bill है approximately, I think if I'm not mistaken, 10,000 crore है. Okay, approximately this much. Now, आप imagine करो, fiscal deficit अभी जो आप देख रहे हो ना, इस पे ये एनकेसिंग कमेटी बना, FRBM रिव्यू कमेटी, राइट? दे हैव टू, उन्होंने क्या दिया, फिस्कल डेफिसिट टारगेट 2.5, राइट? ये जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है, अब उसी पे डिबेट चल रहा है, वेदर इट शुड बी 2.5 3, 3.5, इस पे इतना बड़ा डिबेट है. बट इफ समबडी कैन प्रिवेंट दिस इंपोर्ट बिल, तो ये जो पूरी डिबेट है कि वेदर इट शुड बी 2.5, 2.3 और 2.7, it will become inconsequential. You understand? You are getting my point? Even if अभी तो नहीं, if you remember 3-4 years back, farmer के जो loans थे, उसको waiver था, उस पर बहुत controversy हुई, right? Because farmer suicides were there. Now, if you transfer this money just into farmer loan जो waiver है, तो वो सारी debate ही खत्म हो जाएगी. And how somebody can prevent this? Simply, while cooking. While using food, just put whatever half oil of, जितना भी आप ऑयल यूज करें उसका हाफ यूज करो, तो 5,000 करोड़ तो ऐसे ही बच गया, सीधे सीधे. Got it? See now, this is very very practical solution. इतना मनी है, ठीक है, 5,000 करोड़ तो जो edible oil consumption है, this point you can bring in let's say attitudinal change, psychological aspect. तो बाकी जो डिबेट है कि हाउ मच मनी, हाउ मच मनी वी शुड, वेदर वी शुड गो फॉर फार्म लोन वेवर और नॉट, हाउ मच शुड बी अवर फिस्कल डेफिसिट 2.5, 2.6, 2.8, ये सारी डिबेट खत्म हो जाएगी इफ यू कैन सेव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी. सिमिलरली क्रूड ऑयल का जो इम्पोर्ट है, राइट, उसमें लेट्स से जनरली आपको पता नहीं है, कभी कभी क्या होता है ना, researchers have estimated that 15 to 20% fuel goes into traffic jams. जो traffic jams होते हैं ना, वहीं पे उसका 15 to 20% loss है. Try to understand this. This is big thing. Now, if you just change that habit, that attitude, that whenever you're in traffic jam, switch off your engines, this will be the saving. तो जो crude oil का जो import bill है, कितना save हो जाएगा? So all this comes into the attitudinal aspect. So since you mentioned that thing, so I thought I will mention, I will just take up. ठीक है, तो आप लोग आंसर लिखिए और कोई we will meet
सी ग्रुप में जो भी हो रहा है, जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग दैट. विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ यू विल सी कि द काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग, उसी से नहीं उतना हाई लेवल का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे तो प्रीलिम्स का पेपर तो आपको बहुत छोटा लगेगा उसके सामने. वो क्वेश्चन फॉलो करते रहो, जो भी मैं पीडीएफ हो रहा उसको थोड़ा रीड करो, ट्राई टू अपने जीएस इकोनॉमी के जो नोट्स हैं उससे उसमें थोड़ा 1-2 पॉइंट डालो वहाँ पे, एंड ग्रेजुअली इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ यू विल सी. बट दिस एक्सरसाइज वन हैज टू डू. जो 80 क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के पीवाईक्यू को, उसको लिखो. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, थैंक यू.